गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जगन्नाथ का कृपार निहाती आपण मैंने बहुत ही भलर थे। तो जो मैंने सेकेंड सेमिस्टर देवाई चाहते नागार्जुन B.ed रे तो बहुत गुड़ी प्रोब्लेम हुए टीचर चॉइस को लेकर कहीं ये टीचर चॉइस जो बुक आपण मान पाखे आवेलेबल अच्छे जो मैंने आपण मान कौन इनट्यूट बिलोंग्स कर जो आप B.ed भी करूँ एमती टीचर चॉइस बुक आपण मानक मिलती किंतु एथिरे कौन हो बहुत सर्ट नोट दे था बहुत ही सर्ट नोट दे था जो आम प्रोब्लेम पड़ो कि किपर आम लंग क्वेश्चन लिखा आम कौन लिखा द्वारा आमको भल मार्क मिलवा। तो आज भिडियोटी सेमती आपण मानकर सेकेंड सेमिस्टर को नहीं आशा कर आपण मानक भल लगे निहाती गोटे कमेंट सहित सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। तो आज विषय पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन दिस इज ऑल्सो एंड व्हाट इज द प्रपोज ऑफ क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन पूरा ओडिया रे बुझेबी इंग्लिश सहित ओडिया आपन चाहे निजे नोट मेकिंग करें आपन चाहे पूरा ताको डाउनलोड कर रखिपारे पर शुणी पारे कहीं बहुत गुटे प्रोब्लेम को फेस करा पड़े जब नागार्जुन B.ed करने जाती। तो ऑलरेडी जो मैंने फास्ट सेमिस्टर देती जदि आपण मानकर किसी डाउट अच्छी आपण मत डायरेक्ट कॉल कर बुझीपारती पूरा फुल्ली ओके आपनकर डाउट क्लीयरिंग क्लास मत रहिबो। तो आज भिडियोटी होची क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर। तो आम कौन लिखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन कौन करवा ना व्हाट इज क्लासरूम एंड प्रपोज ऑफ क्लासरूम ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम ऑल्सो यू कैन कॉल नेचर एंड स्कोप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट ऑल्सो। सो फर्स्ट पॉइंट इज arrange the students in the classroom in such a way that you can make eye contact with every student and every student should feel they are being watched. It means arrange the students in the classroom गोटे क्लासरूम वा श्रेणी कक्ष जो आम पिला को बसाइबा तो एमती बसाइबा दरकार इन सच वे that you can make eye contact with every student आपण मनकर आई कंटाक्ट प्रत्येक पिला पाखे पहुँचवा दरकार जेमिति कि प्रत्येक पिला भावतु जे टीचर मत ही पचारि पारते। सो बी अटेंटिव वे स्टूडेंट माने पाठ पढ़ा को जी यदि आपण पढ़ाऊँच तो आपण आई कंटाक्ट नथिबो तो आपण दुष्टामी करिपारंती आपण नटी मध्य होई पारंती किंतु जदि कोनोसी टीचर आई कंटाक्ट डायरेक्ट आपण को पढ़े आपण भावंतु या फील करंतु आपण कोनोसी भूल करिवे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल arrange the students in the classroom in such a way that you can make eye contact with every student and every student should feel they are being watched. It means सबु पिला मन मन भावतु जे टीचर मत देखुं एवं टीचर भाव कि मु सबु पिला को देखुँ तो जहाँफल कौन हम ना क्लासरूम मैनेजमेंट एते 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 लग्जरीयस एते एते लविंग हम जहाँ आपण मत भाई पारे नहीं। नंबर 2 पॉइंट if some students are frequently caught up in laziness and have into work with minimal efforts in a particular seat then you can change their place and keep them in seats from where you can clearly observe them. So next point, if some students are frequently caught up in laziness आपण माने बैक बेंचर्स कथा जानिथिबे जो माने टिके भलो पाठ पढ़ाते जो माने टिके भलो लिखा को पसंद करते जो माने हमर टीचर मानकर प्रिय पात्र होता से मानको आग बेंच रे बसई दिया जाए किंतु जो माने बैक बेंचर्स जो माने पछ को जो माने पाठ उठे डरुचंती बा पाठ पढ़ा को लेकर गुरुत्व नहांती तो से मानको कौन करा जो देखे बारंबार बारंबार यदि गोटे पिला बा गोटे शिशु बा गोटे स्टूडेंट जहाँ भी किसी कहींपारे यदि बारंबार ये कथाटा करुचे तो आपन तो कौन करेंगे ना आप पछ को नुहे ताकू नहीं आग को बसवा दरकार एवं गोटे पर्टिकुलर सीट जब से तो पर्टिकुलर सीट को चेंज करवा दरकार ना सीट चेंज करवा द्वारा कौन हुए ना तार जो आम रोचे कौन ना फिजिकल आउ गोटे मेंटल मेंटल जो प्रेसरटे अच्छी डाउन हो जाओ। तो ये गोटे कथा कहवाक जी हूँ तो B.ed रिलेटेड नुहे गोटे इंटरव्यू में देवाई जाती गोटे क्वेश्चन आसाला ये आम टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस सपोज गोटे पिला आप देखिले जे सेकेंड बेंच रे बसवा द्वारा
से पाठ को डरुचे डे बाय डे से कौन सीट को पछक नौचे धर सेकेंड बेंच रे पुणी थर्ड बेंच रे पुणी फोर्थ बेंच रे के बसला कि फिफ्थ बेंच बसला कि रिपीटेडली से पाठ को डरी डरी जाऊँगी बा तुम क्लासरूम रे एते एंजयफुल हवा फल से पाठ को डरुची और जहाँफल तुम कौन करवा दरकार से पिलाटी पाठ को न डरी भल से पाठ पढ़ी पार। तो मोर से गोटे आंसर थिला से पिलाटी जो आरंभ कर सपोज लास्ट बेंच रे बसीचे तो मु कौन हठात लास्ट बेंच को फास्ट बेंच बनइबार अच्छे माने सेपट को पहुँची जबार अच्छी और प्रत्येक पिला को पछ को बुलेबार कहबार अच्छी कहीं पछ पिला जो बुलीजे पछ पिला हो पछ पिला जो मैंने आमर फिफ्थ बेंच पिला हो फर्स्ट बेंच पिला हो फिफ्थ बेंच एवं ताको एपरी किसी क्वेश्चंस करवा दरकार बहुत ही इजी क्वेश्चन जे जहाँफल मन भर भय ता मन भर जो विद्वेष भाव पाठपढ़ा प्रति घृणा भाव जो पाठपढ़ा प्रति डे बाय डे पॉजिटिव वे ताको चेंजेस करने को पड़ो। सो इफ सम स्टूडेंट्स आर फ्रिक्वेंटली कट अप इन लेजिनेस जदि किसी पिला कौन होता आपंकर लेजिनेस हाँपाई प्रॉपर्ली गोटे सीट्रे बसुँच तो ताको प्रथमे टीचर कौन करवा दरकार ना सीट चेंज करवा दरकार। नंबर 3 अरेंज अप डेस्क बेंच and other materials should be such that it provides you proper opportunity also to reach each one with easy. Okay, students should also find it easy to move around especially with activities are conducted. जितेबाला आप डेस्क बेंच को आरेंज करुँचे से एपरी भाव डेस्क बेंच को आरेंज करूँ जमी आप प्रत्येक पिला को कॉपी चेक करें प्रत्येक पिलार एक्टिविटी को नजरअंदाज करें प्रत्येक पिला पाखे टीचर पहुँचवा आवश्यकता अच्छे और टीचर पिला माने जमी मुव करें डेस्क बेंच सहित किसी खेली पारे किसी एक्टिविटी करें डांस म्यूजिक आर्ट कराटे अदर थिंग्स लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो। So students can easily handle all the activities and participate in partially or important. Partially भी से माने एक्टिविटी हुआ या भेरी इंपोर्टाट पार्सल किंतु प्रत्येक पिला एक्टिविटी भाग नवा दरकार। क्वेश्चन सॉरी 4 नंबर change the physical layout also arrangements whenever necessary to suit your teaching style and methods of teaching. The arrangements can be changed whenever students are involved in group activities and cooperative learning also. आपण आउ कौन कर फिजिकल लेआउट कर देखो आपड़ जो बसुँच गोटे एमती आपणकर स्लो लर्नर बसई पारे आउ गए मिडिल लर्नर बस पारे आउ गए आपणकर गिफ्टेड चाइल्ड तो 3 जन जो गोटे बेंच रे बसुँच सो स्लो लर्नर जी अच्छे से चेष्टा करे मिडिल लर्नर ठार किसी देखिक करने मिडिल लर्नर कौन कर गिफ्ट लर्नर ठार देखा तो जहाँफल कौन अच्छी निज निज भर लर्निंग शेयरिंग होचे तो लर्निंग शेयरिंग द्वारा जो गिफ्टेड चाइल्ड से मीडियम आप जो लो को कौन कर पाठ नॉलेज को ग्रो कर जहाँफल निजर फायदा हाँ सहित ये 2 जनकर फायदा हो तार सीटिंग आरेंजमेंट एमती करें तो से कौन कौन आप इनवल्व हबार दरकार टीचर जो इनवल्व नहेले को करिकुलर एक्टिविटीज करे हुए ना तो टीचर को इनवॉल्वमेंट जरूरी दरकार टीचर निजे नाचवा दरकार टीचर निजे गाइबा दरकार टीचर निजे सबकि करवा दरकार बिकज ये तो गला आपंकर 1 to 8 जब आप प्री प्राइमरी सेक्शन जी तो आप मदर टीचर ने माने बापा मार भूमिका गोटे पिलार आपण मैंने हो पारे तो से आप सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करूँ एवं ता सहित कहाँ देखा दरकार ना मेंटली फिजिकली पीसफुल जमी पिलाटे बस पार पिलार नॉलेज को इनर क्वालिटी को डेफिनाइट करा पड़ो जब इनर क्वालिटी को कौन कर पुट आउट करा पड़ो जब बाहर गोटे पिला जमी कहते बणर मल्ला भाया मरीज तो आपन को पुट आउट कर भूमिकाटा कौन कहार ओनली योर टीचर्स। Then point number 5, when the materials within the classroom are arranged, care has to be taken to see that the exit door, okay, and windows are not obstructed. जितेबाला आपणकर सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है क्लासरूम अरेंजमेंट ऑल्सो कंप्लीट देन आपन को देखिबार अच्छे आपणकर एक्जिट डोर
विंडोज से ठीक अच्छे ना एवं तो जेहेतु आपंकर ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ही गरम हो तो पिला को यथा संभव कौन खोला पवन आवश्यकता अच्छे नट कि फैन एसी सब कहीं हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू देखा दे पारे सो व्हेन द मटेरियल्स विदिन द क्लासरूम आर अरेंज्ड care has to be taken also to see that the exit door and windows are not obstructed कौन पर obstacles क्रिएट न कर दरकार कौन कौन ना आपनकर विंडो एंड डोर तो से ध्यान देवे एज ए टीचर पॉइंट नंबर 6 students should be given the responsibility of keeping their classroom neat and tidy also enforce them to do dispose all the waste into the dustbin clean classrooms stimulate good learning ये बहुत ही दरकार इफ आम जदि गोटे कर वन ट्रायंगल फर्स्ट वन इज also you can call teacher another is student another is environment okay ये तीन टाक ट्रायंगल सदृश अच्छा टीचर स्टूडेंट एंड एनवायरनमेंट ये तीन टा भर गोटे जदि भी आपंकर कम पड़गला लाख न पड़गला देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड ओके इट विल बी डिस्ट्रॉयड सपोज टीचर अच्छा स्टूडेंट अच्छा environment is not good then all the learning also not good if teacher is present environment also present or students is not present and teacher and environment also best distracted if student environment is here but teacher is no more teacher is not properly also matter so student and environment also distracted तो तीन जन जाकर गोटे कौन हो प्रोब्लेम ट्रायंगल क्रिएट करते तो ट्रायंगल को पूरा बजाय रखार अच्छे भर्टिक्स सहित सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स विल बी गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग देयर क्लासरूम नीट एंड टिडी ऑल्सो तो से मॉनिटर आपको बाछा पड़ो तो मॉनिटर को बाछा द्वारा कौन अच्छे नीट एंड क्लीन सहित आपण स्कूल मानक जो आमर ग्रुप डी पोस्ट अधस्तन कर्मचारी मैंने अच्छा से क्लासरूम मैनेजमेंट भाग ना दरकार तो आप आउर किसी पॉइंट लिखिपारे 7, 8, 9, 10 करेंगे जमीक कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट फास्ट होकर पंचुआलिटी आप स्कूल आरंभर 5 मिनट 10 मिनट पूर्व पहुँची पारती बट तापर नुहे पंचुआलिटी मैन्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी योर टॉकिंग पावर also respectness also if you judge then we discuss about care classroom seating arrangement already in your book the seating arrangement first curved style circle style theater styles also and a horseshoe style boardroom style but it is I can take that circle style is more important than others because circle styles when you arrange circle style students arrangement seating arrangement then all the students in front of the teacher first of all because the teacher's eye contact the students eye contact are more effective basic of effective knowledge then you can arrange like carved style also circle styles theater styles horseshoe styles also boardroom styles when we conduct an activity also when we conduct a group meeting also when we conduct teacher interaction form teacher interaction classroom management also different types of classroom managements are begin but I think in my point of view that circle stage is more effective to give a proper learning because when you give an example when you give a more effectiveness when you give an activity also so all the students okay gathering are more important and your talking power your giving knowledge okay are most important number 5 time management in a classroom अगर टाइम मैनेजमेंट आप क्लासरूम में नहीं करोगे अगर आप जदि क्लासरूम मैनेजमेंट करिपारिबा नाही ताले आमे मध्य किछि भी करि पारिबानी सो यू हैव टू डिसाइड वी हैव टू डिवाइड इनटू
available time, allocated time, engaged time, academic learning time, pacing time or curricular lesson time also, then transaction time. गोटी गोटी करी बुझबा वीडियो बहुत लॉन्ग होता है बिट पे. Available time, suppose in a 1 year you have to decide a proper timetable. Okay, suppose period number 1 it is 45 minute math, English, geography, history or all the things. Then allocated time, when your period and how many times. So you have to decide it in your lesson plan how many period, what you teach and what the students can learn in your teaching. Okay, so all the government school teacher also, private school teacher also prepare a lesson plan or lesson diary also before go through the lesson or teaching also in classroom also. So it is allocated time, then when your arrival time and departure time is mentioned. Then engage time. Engage time is you can call 3 types of. First, before class, classroom medieval time and ending of the class. What is the before class? Suppose first period is over and second period will be start. So some 5 minutes or 3 minutes the students are hearing and they are only. Okay, so first you recite a poem or tell some story, some attractive sentence also. Then the all the physically and mentally students can togetherness. First of all ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁତ ହି ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନଟଖଟ ଥାଆନ୍ତି. ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଆଇଦର କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବଜାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଇଦର କିଛି ନାଚିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଫୁଲ୍ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବେ. ଓକେ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁର କ୍ଲାସ୍. ଦେନ୍ classroom in middle time. So you have to decide some attractive questions also. Because 5 minutes after 5 minutes 10 minutes the students are get laziness and not attractive also. So you have to put one questions or groupism questions. You can ask GK questions also and subject related question also. You can ask class teacher's name, headmaster's name also, your district, all the things about it, more of them. Okay, so you have to put example also. Suppose you can arrange one debate competition also, like that. The ending of the class, you have to recite again what you teach in this period and what the learners do. Okay, so academic learning time means total whole the year, how many period, how many minute you decided, how you can fulfillment of all the syllables also. Okay, so you can call curricular time means learning time, your other activity times, your suppose Independence Day, Republic Day, all the things about it. So you have to decide a total academic learning time. Learning time means academic learning time, how many hours the students or the teachers can study and the teachers can teach a student also. Then basic or curriculum lesson time. So total केते स्कूल देखते अपन सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 एमती किछि था तो ताको देखिबार अछि. ट्रांजिशन टाइम्स ब्रेक टाइम. सपोज फर्स्ट सेकंड पीरियड पर अपन गोटे ब्रेक दे पारिबे, 3 4 5 पर गोटे ब्रेक दे पारिबे. ब्रेक द्वारा कोन होछि ना पिलांकर रिक्रिएशन हम, रिएक्टिवनेस हम, जो फल कि से आउ टिके भल पढ़ी पारे. ओके, तो ये थिला टोटल क्लासरूम मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप एंड हाउ यू कैन get effective classroom management also. So in this video last we discussed characteristics of classroom management. I think you have to decide classroom management also. Then we discuss about your characteristics of classroom environment bit by bit. First is learning friendly. जितेबले भी आप पिलामानक पाखरे पाठ पढ़ाऊँच आपन को फ्रेंडली आटमोस्फियर क्रिएट करार अच्छे. डरापन कौन चीज ही ना.
डरीगले पे पाठ पढ़ा पड़े सो यू हैव टू डिसाइडेड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट यूज योर स्टूडेंट नेम ओके हे दे वाई ऐसा नहीं बोलना है यूज योर स्टूडेंट नेम पुकारना चाहिए स्टूडेंट ना डाकिले ही पिला माने आगो बढ़ पारे मो ना कहीं डाकिले दीदी मो ना कहीं सर डाकिले ओके सो हाई स्टूडेंट एंगेज्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो जिते आपण मानकर इन्वॉल्वमेंट होबो सेते पिला मानकर मते इन्वॉल्वमेंट होबो सो व्हाट शुड यू डू you should get some pictures some song also you have to prepare a dance class also some you have to prepare a digital classroom also you have to prepare some actions some reactions also okay next point is unthreatening and purposeful learning it means you have to decide one lesson diary also and the lesson prepare because when you prepare lessons you know the how many time your period what is your before classroom management classroom interval also ending of the classroom सारे सब पता अच्छे तो से देखिए अच्छे बी पॉजिटिव बी कूलनेस एंग्री हबार ही ना एंग्री हेले पिला मन को कौन लाभ अच्छे से माने तो ही नटखट अच्छा ना तो बी पॉजिटिव ए भेराइटी ऑफ लर्निंग मॉडल्स आर यूज्ड जिते बड़े भी अपना क्लासरूम को पहुँचते डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स यूज करते जहाँपर अट्राक्टिव लगे आज सपोज चित्र आंकिंट काली गीत आंकतु गीत बोलतु पिला सहित पिला सहित मजाक करूँ मस्ती करूँ डिफरेंट ग्रुप कंपटीशन करें ये सब कुछ अच्छे नेक्स्ट द स्टूडेंट्स आस्क मोर क्वेश्चंस दैन द टीचर पचार पूर्व पिला दी चार्टा क्वेश्चन पचार प्रत्येक पिला जहाँ पर हाबिचुअलाइजेशन माने हाउ दे कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑल्सो एंड दे कैन प्रिपेयर फॉर आंसर ऑल्सो पे अटेंशन इन क्लास में जिते अटेंटिव ही पाठ पढ़े से बहुत ही भल फॉलो ऑल द स्कूल रूल्स एंड गिव योर बेस्ट सो स्कूल जी रूल अच्छी पंक्चुअलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी केयरिंग नेचर ऑल्सो सो तुमको डिसाइड कर तुम्हें कौन करार अच्छे ना करार अच्छे देन गिव योर बेस्ट तुम बेस्ट देवार अच्छे जहाँफल लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्स and your classroom management also best so it is all about your what is management meaning and concept of a classroom and capacity of a classroom management if you feel it is very very good video and share subscribe and like thank you have a nice day stay tuned to Amrita tutorial